So today we are going to start the next chapter, that is the homeostasis. But before we start the homeostasis, let's look at the history a little bit. This concept was introduced in 1857 by a French physiologist, Claude Bernard. He introduced the two environment concept. Ab two environment concept kya hai? It is basically the concept in which we say that there are two environments, the external environment and the internal environment. Now the external environment is that environment which is around us, around the living organisms. ठीक है, ये जो जिसमें आप बैठे हैं, this is your external environment, the environment that is surrounding us. Okay, हमारे इर्द गिर्द जो environment है, this is the external environment. जबकि the internal environment is that environment within which the cells of the organism or the cells of the organism are present. ठीक है, आपकी body के cells जहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनवायरनमेंट. अब इसमें आपके पास क्या है कि ये जो प्लाज्मा है, लिम्फ है, ये सारे दे आर सराउंडिंग योर सेल्स, सो दे आर द इंटरनल एनवायरनमेंट. ठीक है, दे आर द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ योर बॉडी. Now coming to the concept of homeostasis. Basically the homeostasis has been derived from Greek word that is homeos, remuna, that is homeos, which means similar. ठीक है, and stasis दो words हैं. ठीक है, stasis means standing still. अभी Greek word homeos से derive हुआ है the word homeostasis, which means similar, and stasis means standing still. Now what does that mean? Let's look into the definition. It is basically the homeostasis is the capability of living organisms through which it can maintain or nearly maintain constant body condition. अब देखें, when you look at the internal and the external environment, so the external environment keeps changing. The temperature changes, the pressure changes, the light intensity changes. Okay? So there are changes that are occurring in the external environment. So automatically the external environment the changes in the external environment will influence the internal environment. So when the internal environment changes, it might be harmful and it might affect the organism. So organism has been given an ability through which it can retain its characteristics, जो कि इसके normal conditions है, उसको maintain करने के लिए जो capability दी है, या फिर उसको ज्यादा वाइड चेंजेस से बचाने के लिए जो कैपेबिलिटीज दी है, जो मैकेनिज्म्स है, दैट इज द होमियोस्टेसिस. It is basically the maintenance of constant internal environmental conditions. It is a self-regulating automatic process through which a biological organism maintains its stability. क्योंकि अगर एनवायरमेंटल आपका जो इंटरनल कंडीशंस है वो कांस्टेंट नहीं होंगे, वो मेंटेन नहीं किए जाएंगे, तो वो एनवायरमेंट के साथ वेरी करेंगे. टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट इंक्रीजेस, द टेम्परेचर ऑफ द इंटरनल बॉडी विल इंक्रीज वेरी मच. ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट का टेम्परेचर वेरीज, बहुत ज्यादा गर्म भी हो सकता है, बहुत ज्यादा कोल्ड भी हो सकता है. So agar if the internal conditions are not maintained, the same will happen with the internal temperature, and as a result the cells will not be able to function properly. The cells will not be able to perform reactions properly. Okay, so that is why its importance is that it adjusts the body condition for optimal survival irrespective of external and internal condition. ये जो homeostasis का mechanism है, इसका main importance क्या है कि ये it allows the organism to survive under the optimal condition. जो optimal, जो suitable, जो normal conditions है, उनमें ये survive करता है irrespective के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रही है और इंटरनली आपका पीएच चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि, तो ये उसको वापस से नॉर्मेलिटी या नॉर्मलाइज करने की तरफ लेकर आता है, सो दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव.
इट हेल्प्स टू, और ये इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंजाइम एक्शन को मेंटेन रखता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, पीएच चेंजेस आते हैं, तो एंजाइम एक्टिविटी पे इट अफेक्ट्स वेरी मच, इट अफेक्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी वेरी मच, ठीक है। अगर एंजाइम एक्शंस अफेक्ट होंगे तो आपकी जो इंटायर बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होगा, वो नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इट मेंटेन्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सेल्स। नाउ जरूरत क्या है होम्योस्टेसिस की? The just like I told you, the external conditions change throughout the day, or throughout these conditions are changing, they are not constant, they are dynamic, ठीक है। वो dynamic है, वो changes external environment में changes होती रहती है, ठीक है। So when these changes are occurring, when these changes are occurring, so it will influence or it will affect the organism में affect किस तरह लाते हैं, we study that further, अभी आगे पढ़ेंगे, वो आपको ज्यादा भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी कॉमन एग्जांपल है टेम्परेचर की, the temperature is increasing so you feel warm, ठीक है। that is why, because your internal body temperature is increasing. तो अगर if homeostasis is not done, so your body will change the temperature according to the external environment, and it will become very warm, the temperature will increase and very much, and as a result the enzyme action cannot be performed, बाकी body की जो reactions and metabolic processes हैं वो नहीं हो सकेंगे। So that is why it is needed to maintain homeostasis, because in constant internal conditions या environment conditions are needed for the survival of the organism. Now coming to the next one. Now major factor in both external and internal environment is temperature, atmosphere, mineralize, जो gaseous mixture है, ठीक है। ये दोनों में आपके पास important factors हैं। Internal body temperature is very important, and in the same way external factors में temperature एक important factor है। इसी तरह gaseous mixture है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये internally भी बहुत important है, externally भी they are important. Mineral ions, all these things are important factors. Ab, just like I told you, the external environment never remains constant and is dynamic. Dynamic means it keeps changing, ठीक है। जिस तरह temperature कभी it can be very high or it can be very low, the oxygen concentration can change, ठीक है। इसी तरह light intensity change हो सकती है, mineral availability change हो सकती है, कहीं जगहों पे आपके पास कोई मिनरल अवेलेबल होगा, कहीं पे नहीं होगा, कहीं पे एक्सेस में होगा, कहीं पे स्कार्सिटी होगी उसकी। सो दीज in external conditions keeps on changing and they are dynamic. A constant internal environment is needed. Why it is needed? I just explained that it is needed so that the organism can survive, for the survival of the organism. Increase or decrease of any factor within the body like water availability, temperature, etc. is unsuitable. कि अगर एक्सेस में वाटर है तो भी suitable नहीं है, अगर scarcity है it is it can cause dehydration. इसी तरह टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो फीवर हो सकता है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की वजह से एंजाइम एक्टिविटी खराब हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा लो हो तो a person can have cold and can be affected with that, ठीक है। However, it does not remain constant due to influence of external stimuli. For example, our average temperature is 37 degrees C. However, the external environment influences the internal temperature. Similarly, water intake, solute ratio can also be influenced by the external environment. Just like I told you, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, you people start to feel warm, ठीक है। अब that is because the external temperature is affecting your internal temperature, ठीक है। इंटरनल टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप वाटर इनटेक कम करते हैं तो आपका इंटरनली भी द वाटर कंटेंट कम्स लोअर, ठीक है। सो दीज व्हेन अगर कहीं पे वाटर नहीं है तो आपका वाटर इनटेक कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट इंटरनली आप में वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी, डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगी,
So these are the factors when they are changing in the external environment, so they cause changes in the internal environment, and these changes can be fatal or dangerous. जिस तरह टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो दैट कैन बी फेटल, ठीक है. तो that is why it is needed to maintain the constant internal conditions through the mechanism of homeostasis. ये आपके पास homeostasis, that is why it is very important. The term homeostasis was introduced in 1932 by Walter Cannon, an American physiologist. Now, mechanism of homeostasis, how the different processes come together and they perform the homeostasis. They maintain the constant internal conditions. अब उसको हम कहते हैं mechanism of homeostasis. Now, there are three major components in the mechanism. The first one is the receptor, which is also called as transducer. The second one is control center, which is also called as the integrator, and the third one is the effector, which is also called as the optimizer. ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो कि होमियोस्टेसिस को लाने में they actually perform the homeostasis, or they maintain the constant body condition. Now, what is the receptor? It is basically the basic component of self-regulation, which is the homeostasis. What is it? It detects or receives the change in any variable. कोई भी चेंज, कोई भी ऑल्टरेशन, कोई भी नॉर्मल से जब कोई भी वेरिएबिलिटी वेरिएशन आएगी किसी भी वेरिएबल में. नाउ व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल इज द फैक्टर दैट चेंजेस. द फैक्टर दैट चेंजेस इज बेसिकली द वेरिएबल, चाहे वो इंटरनल फैक्टर है चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से है. जिस तरह टेम्परेचर वो चेंज होता है, सो इट इज अ वेरिएबल. ठीक है, pH है, it changes, so that is a variable. Pressure है, it changes, that is a variable. So whenever changes occur, that change needs to be detected or received by any part or organ or structure. So those components that receive the changes that happen in any variable within the external or internal environment is called as the receptor or transducer. अब रिसेप्टर आपके पास दो टाइप्स के होते हैं. one is chemical receptor, the other one are the nervous receptors. The chemical receptors आपके पास they are the hormonal receptors. These are present on the cell membrane. ये कोई भी अगर चेंज आ रहा है chemically, chemical change आ रहा है, they receive it, they detect it. फिर आपके पास दूसरा है नर्वस रिसेप्टर. ये आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स है जो कि किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसको कंट्रोल सेंटर के पास लेके जाते हैं. जिस तरह आपकी बॉडी में टेम्परेचर चेंज किस तरह डिटेक्ट होता है? थ्रू थर्मो रिसेप्टर्स. जब टेम्परेचर चेंज होता है तो आपकी बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स, they receive it and then they carry the message of the variation in the temperature to the control center. अब what does the receptor do? They receive the stimuli from the external environment or the internal environment and forward the message to the control center. Control center के पास लेके जाते हैं कि अच्छा, this is the change, this is the variation that has occurred. How अब उसको ये किस किस्म की चेंजेस है, what action needs to be performed, उसको एनालाइज करना, इस चीज को समझना, it is the work of the control center. The message from the receptor is carried to the control center. Now, what action needs to be performed, what kind of change it is, what needs to be done, that is controlled by the control center. That is why it is called control center, because it basically, it basically controls the entire function of the effectors. के response क्या होगा. So the message from the receptor is integrated, that is analyzed and put together in the control center, जो कि आपकी body में is the brain. ठीक है, and it is also called integrator, and it sends the message or response to the effector. Okay,
the temperature has been the high temperature has been received कि यहाँ इस जगह पे there is high temperature. The brain, the receptors receive this message, they carry it to the control center. Brain will analyze it कि what kind of change this is. अच्छा, the brain has analyzed कि the temperature is, this is the change in the temperature. यहाँ पे temperature बहुत ज़्यादा है. This person is standing in the right in the sun, not in a shade. So the brain is analyzing it कि what action needs to be performed. So वो आपकी बॉडी को इफेक्टर्स को रिस्पॉन्ड करता है. इट मैनेजेस योर रिस्पॉन्स. अब ये रिस्पॉन्स को किस तरह मैनेज करता है? बिकॉज इन द वे कि इट सेंड्स अ मैसेज टू द इफेक्टर्स. इफेक्टर को मैसेज जाता है कि नाउ दे नीड्स टू डू समथिंग. किस व्हाट डू समथिंग. अब वो इफेक्टर को मैसेज पहुंच जाता है कि दिस इज द एक्शन दैट नीड्स टू बी परफॉर्म. अब इफेक्टर का काम क्या है? इट्स बेसिकली इट्स फंक्शन या इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑप्टिमाइजेशन. इसीलिए इसको ऑप्टिमाइजर बोलते हैं. ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना है कि व्हाट ये जो एक्सटर्नल कंडीशंस है या जो इंटरनल कंडीशन है उसके अगेंस्ट या उसके रिस्पांस में कोई भी स्टिमुलस है उसमें क्या रिस्पांस देना है इसमें इफेक्टर ने. जिस तरह रिस्पांस ये हो सकता है कि आप धूप में खड़े हैं. the effectors what will we do? They in this case let's say they are the muscles. तो वो muscles वहां से you start moving and you stand in the shade. आपकी बॉडी में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है. ग्लैंड है तो आपका बॉडी टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है. ये आगे हम जरा डिटेल में देखेंगे. ठीक है. सो द इफेक्टर्स आर ईदर मसल्स और अ ग्लैंड. Let me enlarge this. Let's take the example of a common incubator in the lab जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. इंक्यूबेटर बेसिकली कंट्रोल्स द टेम्परेचर. ठीक है. ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है. I think you people might know. ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है. अच्छा जी, कॉमन लैब इंक्यूबेटर की एग्जांपल लेते हैं. आपकी बुक में इसकी एग्जांपल दी है. अब उसमें एक टेम्परेचर सेट किया जाता है. ठीक है. अ टेम्परेचर इज सेट कि दिस इज द टेम्परेचर. इट कैन बी एनी टेम्परेचर. वो आप पे डिपेंड करता है. 32, 30 कोई भी टेम्परेचर आप उसमें सेट कर देते हैं कि whatever the changes in the environment, external environment or wherever, the temperature should be maintained at 32 degrees. ठीक है. उसको हम सेट टेम्परेचर बोलते हैं. वो आप सेट कर देते हैं. नाउ इफ द टेम्परेचर बिकम्स मोर देन 32, अगर उसमें टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है 32 से, तो उसको दिस चेंज इन द टेम्परेचर इज डिटेक्टेड. उसमें आपके पास रिसेप्टर्स है. अब लैब इंक्यूबेटर में रिसेप्टर क्या है? उसमें आपके पास थर्मोमीटर है, टेम्परेचर सेंसर्स है. ठीक है. ये थर्मोमीटर या जो टेम्परेचर सेंसर है वो इस चेंज को डिटेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे इट इज द रिसेप्टर. अब ये थर्मोमीटर will direct the message. अब उसमें डिटेक्ट हो गया कि the temperature has become 40 or whatever the temperature. लेकिन 32 या 30 जो भी है, I think आपकी बुक में it's written 32, so 32 ले लेते हैं कि 32 से ज्यादा हो गया है टेम्परेचर. So it will detect, the thermometer will detect the change. It will show the temperature as 32. Now this message will be taken to the control center. अब यहाँ पे कंट्रोल सेंटर क्या है? इट इज द थर्मोस्टेट जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा. थर्मोस्टेट. ठीक है. तो वो एक्टिवेट करेगा जो हीटिंग कॉइल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा कि ये स्विच ऑफ हो जाए. जो हीटिंग प्रोड्यूस होगी जिसके द हीटिंग थ्रू हीटिंग कॉइल्स, इंक्यूबेटर में हीटिंग प्रोड्यूस होती है थ्रू हीटिंग कॉइल्स, तो वो उनको स्विच ऑफ करने का मैसेज पहुंचा देगा. दे विल स्विच ऑफ. ठीक है. तो द हीटिंग कॉइल्स विल स्विच ऑफ. वो इफेक्टर्स हो गए आपके पास एंड द टेम्परेचर विल कम बैक टू 32 या 32. ठीक है. तो ये आपके पास इट इज बेसिकली एग्जांपल है होमियोस्टेसिस की. आसान अल्फाज में
तो अब इन केस वेयर द टेम्परेचर बिकम्स लेस देन 32, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो चेंज है इट विल बी डिटेक्टेड बाय थर्मोमीटर, जो कि इस केस में आपके पास रिसेप्टर है, वो मैसेज भेजेगा टू द ब्रेन, जो टू द कंट्रोल सेंटर व्हिच इन दिस केस इज द थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में उसको एनालाइज करेगा कि अच्छा नाउ द टेम्परेचर इज लेस, तो वो हीटिंग कॉइल्स को मैसेज भेजेगा कि टर्न ऑन, so the heating coils will turn on, which in this case are the effectors, and as a result the temperature will increase to 32 degree। लेकिन जो सेट पॉइंट है वो 32 डिग्री है, जो कि आपके पास होम्योस्टेसिस को इस सेट पॉइंट पे मेंटेन करना है, जो कि इस केस में आपके पास एक कांस्टेंट कंडीशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द thermoregulation in man, temperature regulation in man. Now when the temperature becomes elevated, that is more than normal body temperature, which is 37 degree, जब 37 से ज़्यादा हो जाएगा, the body eventually feels warm and the globular proteins and enzymes can be damaged। I told you कि enzymatic activity एक खास temperature पे होती है, आपकी body के proteins आपके खास temperature पे काम करते हैं, when the temperature is increased they can be damaged। So this elevation will be detected by receptors for temperature, which are called as the thermoreceptors। जब this change in the temperature is detected कि टेम्परेचर हाई है, तो ये मैसेज जाएगा टू द कंट्रोल सेंटर या फिर थर्मोस्टेट, जो कि आपकी बॉडी में क्या है, इट इज द हाइपोथैलेमस, इट इज द हाइपोथैलेमस, द कंट्रोल सेंटर फॉर टेम्परेचर और थर्मोरेगुलेशन इज द हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस इस रिस्पांस को एनालाइज करेगा, इंटीग्रेट करेगा, और फिर उसके बाद इस स्टिमुलस को एनालाइज करेगा, इंटीग्रेट करेगा, और उसके बाद रिस्पांस के लिए इट विल सेंड अ मैसेज टू द इफेक्टर। अब यहाँ पे द इफेक्टर्स आर द स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स, वहां पे वेजोडाइलेशन होगी एंड एज अ रिजल्ट स्वेट विल बी रिलीज, और स्वेट आपका इवेपोरेशन होगी एंड द टेम्परेचर विल कम डाउन, ठीक है, तो वो कूलिंग हो जाएगी, temperature will be come back to the optimized condition, that is the 37 degree। इसको हम thermolysis भी बोलते हैं, ठीक है। दोबारा से I'll repeat it कि when the temperature becomes elevated, आपका 37 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, अगर उससे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर विल बी डिटेक्टेड बाय द थर्मोरिसेप्टर्स। Thermoreceptors, they are the receptors in this case, तो वो उनको उसको डिटेक्ट कर लेंगे and they will send a message to the hypothalamus, which is the control center in this case। The hypothalamus will analyze it, this is the receptor is saying that the temperature is high, and the thermostat will analyze it, now it will perform or determine what action needs to be performed। ये क्या करेगा, इट विल सेंड अ मैसेज टू द स्वेट ग्लैंड्स टू रिलीज द स्वेट। इसी तरह वेजोडाइलेशन भी होगी, वेजोडाइलेशन इज क्या, ब्लड वेसल्स वाइडन या डायलेट करते हैं, तो हीट रिलीज होती है फ्रॉम स्किन टू द आउटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड स्वेट भी रिलीज करेंगे, तो उस इन दोनों एक्शन से क्या होगा कि द बॉडी टेम्परेचर विल बी रेगुलेटेड, हीट रिलीज हो जाएगी बॉडी से, ठीक है, और टेम्परेचर वापस कूलिंग की तरफ आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द थर्मोलाइसिस। नाउ इन केस वेयर द बॉडी टेम्परेचर इज वेरी लो, तो वो भी आपके पास थर्मोरिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करेंगे एंड दे विल सेंड अ मैसेज टू द हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग द स्वेट, अब हाइपोथैलेमस उसको एनालाइज करेगा कि ओके दिस टाइम द टेम्परेचर इज लो नॉट हाई, अब उसी अकॉर्डिंग वो उन्हीं इफेक्टर्स को मैसेज सेंड करेगा। अब इस दफा इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मैसेज टू द स्वेट ग्लैंड, इट विल सेंड अ मैसेज टू द मसल्स को वो मैसेज सेंड करेगा। अब यहाँ पे इफेक्टर्स मसल्स होंगे एंड नॉट द स्वेट ग्लैंड, ठीक है, तो मसल्स विल स्टार्ट शिवरिंग, जो आपकी इनवॉलेंटरी जब सर्दी लगती है यू स्टार्ट शिवरिंग, उस शिवरिंग की वजह से, उस मसल मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि द बॉडी स्टार्ट्स रिलीजिंग हीट and as a result your body temperature will go back up, and this shivering is also called as the thermogenesis। ये जो sweating वाला है it is the thermolysis, जबकि shivering वाला it is the thermogenesis। heat
हीट जनरेट हो रही है, जबकि थर्मोलाइसिस में हीट डिसिपेट हो रही है, रिलीज हो रही है. ठीक है. Another example is that of the water and solute content in the body. ठीक है. अगर वाटर डेफिशिएंसी है, डिहाइड्रेशन है, तो ब्लड विस्कोसिटी विल इंक्रीज. अब ये मैसेज जो है कि ब्लड कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, ये हाइपोथैलेमस को फॉरवर्ड किया जाएगा. हाइपोथैलेमस विल सेंड अ मैसेज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड कि भाई यहाँ पे तो वाटर कंटेंट कम है. इट विल सिक्रीट एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे. एंड इट विल इंक्रीज द इफेक्ट के जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी से, वहां से वाटर और ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा. एंड एज अ रिजल्ट आपकी ब्लड में वापस से वाटर का कंटेंट नॉर्मल हो जाएगा. Now feedback mechanism. Now coming to feedback mechanism, so this was all about homeostasis. Common examples आपको I have given. Tomorrow we are going to start with the feedback mechanism.